Okay, good afternoon to all of you. Today we have to start the next unit. On the last lecture, in the last lecture we have finished that particular unit 1 of the physical chemistry. Today we are going to start the unit 2 of the physical chemistry. The name of the unit is the chemical thermodynamics colligative property. We have to start first of all with the colligative property. In the colligative properties, we have to see 4 different colligative properties. One will be the elevation in the boiling point, then the depression in the freezing point, osmotic pressure, osmosis, you can say. These are the 3 main that properties we will see in detail in this particular unit. Just I am sharing the screen. Screen is visible? Please, screen is visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. See, in the chemical thermodynamics, why it is called as the chemical thermodynamics? See again, thermodynamics is nothing but the study of these thermodynamics parameters: temperature, pressure, volume, concentration. This come under the thermodynamics. Okay. That's why this particular lesson or say unit has the name chemical thermodynamics. In that we have to talk about the colligative properties. These colligative properties of the dilute solution, which depend only on the number of solid molecule and not on the type or the chemical nature of the species present, are called as that particular colligative properties. Here, as I said, the 4 different properties are there. Out of that, there's 2 is having the 3 is having the derivation. This relative lowering pressure is a little bit the short one. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर, यू नो द वेपर प्रेशर, जैसे कि आप बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन करते हैं तो क्या करते हैं, वेपर प्रेशर बिकम इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इट इज कॉल्ड एज द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड हैज इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज द बॉइलिंग पॉइंट. बराबर है. तो उसमें का जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर मतलब हर एक जो लिक्विड रहता है वो वेपराइज होता है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर पे. एज यू शुड नो कि जो भी लिक्विड होता है उसकी टेंडेंसी होती है वो क्या होता है, ट्राई टू वेपराइज, मतलब उसके वेपर्स फॉर्म होके वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है. तो दैट इज एन वेपर प्रेशर. देन डिफाइन द टर्म. दिस इज अ टॉपिक नेम इन सॉल्यूशन ऑफ द सॉलिड इन लिक्विड. ओके, सॉल्यूशन क्या होता है, इट इज एन होमोजेनियस फेज विच कंटेन मोर देन वन कंपोनेंट. सॉल्वेंट क्या होता है, द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन द ग्रेटर प्रोपोर्शन इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज द सॉल्वेंट. सॉलिड क्या होता है, द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन द लेसर प्रोपोर्शन in a solution as compared to the solvent as known as the dilute solution. Then what is the molarity? What is the molality? Molality is not nothing but the number of moles of solid per 1000 cm cube or say 1 dm cube of a solution is known as the molarity. वैसे ही आपका नंबर ऑफ मोल्स इज नथिंग बट द नंबर ऑफ सॉलिड्स पर 1000 ग्राम और 1 किलोग्राम ऑफ अ सॉल्यूशन इज नोन एज द मोलालिटी. ये सब बेसिक टर्म्स है दैट आर रिक्वायर्ड as per as the MCQ is concerned. Okay, then mole fraction of a component in the solution is the number of moles of that component divided by the total number of moles of all the components in the solution. Mole fraction कैसे निकालते हैं, for the solid and for the solvent is shown here. For the solid it is referred as a x2 and for the solvent it is referred as a x1. x2 is equal to n2 by n1 plus n2. अभी n2 n1 क्या है, these are nothing but the number of moles of the solute and the solvent respectively. n1 मतलब number of moles of the solvent molecule, n2 is nothing but the number of moles of the solute molecule. That you have to remember. ये ध्यान में रखना है, हर हमेशा सोचना है कि ऐसा नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं आपको पता रहना चाहिए. नंबर ऑफ मोल्स वेट अपॉन मास, मतलब जितना मास है और कितना वेट है उससे अपन क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं. सिमिलर केस फॉर द सॉल्वेंट इज देयर, इट इज डिनोटेड बाय द x1. व्हाट इज द आइडियल सॉल्यूशन? अब आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, दैट कैन बी प्रिपेयर फ्रॉम इट्स कंपोनेंट विथ नो इवोल्यूशन और एब्सॉर्प्शन ऑफ हीट, विथ नो चेंजेस इन द वॉल्यूम एंड वन व्हिच ओबेज Raoult's law under the all conditions.
रॉयड्स लॉ इज देयर, आगे अपन उसका स्टडी करने वाले हैं. ओके, under the all the condition is called as the ideal solution. All dilute solution behaves as a ideal solution. Then what is a non-ideal solution? Where Raoult's law does not obey. Okay, the solution which does not obey the criteria for the ideal solution is called as a non-ideal solution or a real solution. उसे आप क्या कह सकते हैं? अगर कोई solution Raoult's law obey नहीं करता है तो भी उसे क्या कहते हैं? Non-ideal solution. Solution are behaving as a non-ideal solution. Then P0 minus P upon P0 is equal to X2, where P0 is the vapor pressure of the solvent at a given temperature. P is the vapor pressure of the solution at a given temperature. What is the vapor pressure or say relative lowering of the vapor pressure? That we have to see in detail. Vapor pressure of a liquid depends on the nature of the liquid, temperature. Nature of the liquid मतलब क्या? Liquid with the weak intermolecular forces have the greater vapor pressure and they are more volatile. Whereas आपको ये MCQs में आएगा, what is volatile and what is non volatile. Volatile मतलब क्या है कि जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो होते हैं लिक्विड के वो वीक होते हैं, तो वो क्या होता है? वोलाटाइल होता है, वो जल्दी ऑपरेट होता है. Then here a liquid with the strong intermolecular forces have the smaller vapor pressure and they are less volatile. As the temperature increases, the more molecules evaporate and go into the vapor phase. Hence, vapor pressure increases with the increase in temperature. Then solution of an electrolyte, solution of non-electrolyte, solid dissociate into ions, solid remain in the molecular state or electrically neutral state. This is the neutral one. Neutral state. सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड सॉल्यूशन ऑफ द नॉन इलेक्ट्रोलाइट. अगर हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या? वो इजीली डिसोसिएट होता है, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब वो डिसोसिएट होता नहीं, रिमेन एज इट इज इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म. ओके, the remaining part we will see in the next lecture. Today we will stop here. Lowering in the vapor pressure we will see in detail tomorrow. कितने लोग हैं? Only 9 लोग are there. Okay, tomorrow we will see. Thank you.